of the such as W3 school is the very best platform for assignment solving. Yeah, you can do that. No, many are there. You just keep solving, you'll get to know. But Geek for Geeks will also be. Yeah, Geek for Geeks, Lead Code, SQL Online. So first of things, the SQL method is the always using the backend technology. Not like that. Like, ma'am will come now. You can ask her all your questions. I'm sure she will clear everything that you have. Yeah, I'm here. You can ask. Hello. Yeah, that is the question. Yeah. Ma'am, the SQL as MongoDB also Django is the all of things are the using for the backend technology. No, MongoDB is something that is a NoSQL database. Okay. So I can also using the Java as the backend technology. Java is a programming language. We can connect through SQL by programming our database system. But sir, why the using the low level and high level system design is the using the Java? No, I'm not getting your question. Low level system design and high level system design Uh-huh. using the Java language. Uh-huh. Why sir? Why ma'am? No, I don't have any idea about Java. So the participants, if any of you have this answer to with you, then you can answer about what he is asking for low level and high level designs. Why we are using them in Java? Ma'am, actually, he is saying that we using this language to connect the database, but in our data analyst, we only extract the data from the database, not creating database from for a website. Yeah, we can create if it's a because these roles, data engineer, data scientist, and data analyst, they are sometimes overlapping. If you are working in a small company, small scale company, then it can be the case that you have to design some database in a startup. Okay, and if you are working in a large scale company, then what you need to do, you just need to extract the values, and you just need to extract the required columns and show them into the chart. So these roles are somewhere overlapping, so it is not, there is not a fine line defined for all of them. Okay, so sometimes we need to make database by our own, and sometimes we just need to fetch the data. So it depends upon the requirements of the company we are working on. Okay, ma'am. Thank you. Fine. Can we start now, or is there any other question from your side? Okay. So I think you people have started these practicing through labs. Labs are implemented. I think you have got the access to them. No, I not don't yet. think so, ma'am. I haven't received any mails. Okay. Okay. But I got an update from Chaitanya that labs have been implemented. Fine. Let's wait for 1 or 2 days. Maybe the case that you can practice over there. Meanwhile, you can practice over many online platforms where we can practice SQL. Okay. So basically, the concept I am telling you, you are getting them right. No doubts in them. Yes, no doubts. Okay. Okay, fine. So let's start today's class. We were discussing about with clause in SQL, that is commonly called as the common table expressions. Fine. They act like virtual tables. My screen is visible, right?
Yes, it's usable. Okay. So what is SQL with clause? Okay, the SQL with clause is used to define temporary tables or result sets within a query. These temporary relations are also known as common table expressions, act like virtual tables that exist only during the execution of the query. Okay, so जब हम सीक्वल लिखते हैं तो कभी कभार होता है कि हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना होता है और मल्टीपल टेबल से डेटा लेकर आना होता है, तो उसके लिए हम विद क्लॉज का यूज कर सकते हैं जो कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाने के काम आता है। ठीक है, और ये जो विद क्लॉज के साथ जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ये वर्चुअल टेबल कहलाता है और ये सिर्फ उस क्वेरी के एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही एग्जिस्ट करता है। क्वेरी का एग्जीक्यूशन खत्म तो इसका रिजल्ट और जो भी इसका आउटपुट आया वो भी वहां से वैनिश हो जाएगा। ओके, so we can use these temporary tables multiple times in the main query, making it easier to manage and reuse complex logic without repeating the same subquery. तो ये जो पार्ट है ये मैंने आपको पहले एक बार एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी एक बार इसे दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि हम लोग इसे स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी। This method also helps in performance optimization as the query planner can optimize the reuse of intermediate results instead of re-executing the same complex subqueries multiple times. तो जो सबक्वेरी हमने लिखी है विद क्लॉज के साथ वो एक बार एग्जीक्यूट होती है और उसका रिजल्ट स्टोर हो जाता है, फिर हम उसे बार बार हमारे क्वेरी में मेन क्वेरी के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, so अभी हमें ये क्यों यूज करना चाहिए, why we need to use this with clause? So it improves readability by breaking down complex queries into smaller and more manageable parts. It enhances maintainability. It makes our query easier to debug and modify. Okay, so we can debug by just executing some part of the query, and then we can modify the results if it is not if the output is not like that we wanted. Okay, so it also optimizes performance. It reduces redundancy. Redundancy is repetition of data and ensures that temporary results are only calculated once. ठीक है, तो अब इसका सिंटेक्स मैंने पहले आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था ये। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, पहले विद क्लॉज लिखना है और उसके बाद उस टेबल का नाम लिखना है जो हम हमारी जो सब क्वेरी है उसे देना चाहते हैं। ठीक है, सो हियर वी यूज टेम्परेरी टेबल्स एंड एवरेज वैल्यू इज द नेम ऑफ द कॉलम that this temporary table has within it. Okay, as then the name not name the query itself we need to write select average attribute 1 from table. So this is some dummy table I am talking about here. Okay, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एवरेज निकाल रहे हैं कॉलम एट्रीब्यूट 1 के लिए टेबल में से। ठीक है, टेबल का नाम यहाँ पर हमारे पास टेबल ही है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट 1 का एवरेज आया इसको हमने यहाँ पर कंपेयर करवाया है। ठीक है, temporary table dot average value is basically the result that is coming from the query that is present in the with clause. Okay, this one. Now select attribute 1 from table. अब हम दोबारा से हमारी मेन टेबल का यूज कर रहे हैं, उसके साथ टेम्परेरी टेबल का यूज कर रहे हैं और वहां पे हमने टेबल जिसमें एट्रीब्यूट 1 प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को कंपेयर किया है टेम्परेरी टेबल डॉट एवरेज वैल्यू से। ठीक है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस विद क्लॉज क्वेरी। ओके, तो अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल सिर्फ सिंटेक्स आपको दिखाने के लिए था कि भाई सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, वो आप इससे देख सकते हैं। नाउ इसमें जो की टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ, वैसे मैंने समझा ही दिया है पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। The with clause defines a temporary relation, that is the temporary table, which contains values selected from some table. The subsequent select query uses this temporary table in the main query to perform a join or filter data based on a specific condition. So here we are using this condition to filter the data. Note, when a query with a with clause is executed, first the query mentioned within the clause is evaluated. तो अभी यहाँ पे एक हमारे पास मेन क्वेरी है, ठीक है, और एक क्वेरी है जो कि with clause के साथ है। तो पहले कौन सी वाली क्वेरी रन होगी, this query will run first, that is present in with clause. Fine. Okay, and the output of this evaluation is stored in the temporary relation. Following this, the main query associated with the with clause is finally executed that would use the temporary relation produced. Fine. Examples of SQL with clause. Let's look at some practical example for now.
Okay, so what we need to do here, we are finding employees with above average salary. Okay, so we have an employees table where we have the salary column present and the name of the employees also. So what we need to find out, we need to find out the names of the employees or the ID of the employees where the average salary is where the salary of the employees is above the average salary of all the employees that are present in the एम्प्लॉय टेबल. ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है हमारी एम्प्लॉय टेबल से, हमें वो सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है. ठीक है, और एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को कंसिडर करेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे. ठीक है, so this examples demonstrate how to find all employees whose salary is higher than the average salary of all employees in the database. The query calculates the average salary using the with clause. Okay, तो अभी यहाँ पे हमने जो with clause में लिखा है with temporary table average value as select average salary from employees. So this query that is present in the with clause is calculating the average salary of all the employees that are present in the database. Okay, the query calculates the average salary using the with clause and then it compares each employee's salaries. Okay, so in this next main query where we are using the select clause, here we are finding out the employee IDs, names, salary from the employee table while using the temporary table that is present with the with clause where employee.salary. Okay, so employee.salary is coming from the employee table, that is the main table, should be greater than temporary table dot average value. So this temporary table dot average value is coming from here. Okay, from the query that we have mentioned in the with clause. Fine. Okay, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? Any doubts in this, with how we need to write the syntax of with clause? Okay, let's move further. Ma'am, So important things. Yes, बताइए. I just don't get the point. Like, isn't same as subquery because we are running a query and the output is used for another query? It is somewhat same as subquery, but in subquery we can't use the result of one subquery multiple times in the main query, right? But when we declare some subquery with the with clause, we can reuse it multiple times with the main query. Got it? So I can use this temporary table anywhere apart from this, but specific this employee ID, this query that you have written below, right? If you want to write this query more here, you need to find out something else also with this average salary. Okay, so you can use this temporary table while writing the query further in the same session. Fine. Okay, but that means I can use this temporary table apart from this specific query as well in this session, right? No, you can't use it. You can use it here only in the with clause multiple, after the with clause multiple times. Okay, after this select clause, if you want to write one more select clause, then you can use this temporary tables. Okay, Okay, fine. but if it is in a subquery, you can't use it. Okay, because subquery is nested or correlated or basic subquery that is present within a main query, right? अभी आप subquery लिखते तो आप इस select clause के अंदर ही लिखते, ठीक है? Okay, है ना? got it. So it is above the select main clause. Okay, this main query, select main query, and we can use it multiple times. Okay, now temporary lifetime, the temporary tables that we call common table expression. So what is the common table expression present over in this query? It is temporary table. Okay, defined in the with clause only exists during the execution of the query. तो अभी सिर्फ ये एग्जीक्यूशन के लिए ही एग्जिस्ट करेगा. ये क्यूरी फिनिश हो जाती है तो ये डिस्कार्ड हो जाता है इसका रिजल्ट. वंस द क्यूरी इज फिनिश दे आर डिस्कार्डेड. ओके, नेस्टेड विथ क्लॉज. अभी देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही विथ क्लॉज लिखा है, ठीक है? तो अभी हम लोग नेस्टेड विथ क्लॉज लिख सकते हैं. मतलब अगर मैं एक और क्यूरी यहाँ पे देना चाहूँ, ठीक है, कॉमा करके विथ के साथ, तो मैं यहाँ पे एक और टेम्परेरी टेबल मेरे पास बन जाएगा और फिर उसे भी मैं इस सेलेक्ट क्लॉज में यूज कर सकती हूँ. ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे.
ठीक है, अगर नेस्टेड हमें विद क्लॉज यूज करना है या नेस्टेड कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करना है, तो फिर हम लोग कैसे लिखते हैं, with common table expression 1 as this. Okay, so this one, the selected portion at my screen, you can see CTE1 as something in the parenthesis, so this is basically this one. Okay, if I want to give one more common table expression here, then I need to use comma and then the common table expression, and I need to use as to rename it, to give it as one alias. Okay, and then one main query, select a star from CTE1 comma CTE2, so we can use it according to our requirements. Okay, now परफॉर्मेंस कंसिडरेशन, अभी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है इसका वो देख लेते हैं. While the with clause is excellent for readability and maintainability, it can sometimes be less sufficient in cases where the temporary result set is large. अभी मेरा जो temporary result set है वो अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो फिर ये optimized नहीं कहलाएगा इस केस में. ठीक है, तो हमें उसके लिए एग्जीक्यूशन प्लान को चेक करना पड़ेगा कि हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमारी क्वेरी के लिए, और हमने कैसा क्वेरी लिखा है, उसका कैसा एग्जीक्यूशन प्लान है, वो कितने टाइम में हमें रिजल्ट लाके दे रहा है, वो कितना सीपीयू यूज कर रहा है, तो वो हम एग्जीक्यूशन प्लान देख के पता कर सकते हैं. ठीक है, तो जब हम क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे देखते हैं SQL सर्वर में एग्जीक्यूशन प्लान. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी. Okay, so the new file is visible to you all, right? Yes. Okay, so we are going to create one employee table here with employee ID, employee name, and salary. Afterwards, I'm going to insert some values in this, and then I'm showing the values to you. Okay. Now, can you see the values here? Employee IDs, employee name, and the salary we are having 40, 50, 60, 70, 80, and 90,000. Right. Okay, so here you can see what I am doing. I am finding average salary with clause. Okay, average salary of all the employees. Fine. And then I am using one main query here, select star from employee, and I'm giving it as E, the alias, and I'm joining it with average salary on E dot salary greater than average salary dot average salary. Okay, so this avg underscore cell is our temporary table, that is the common table expression that we have computed here, right? And this average salary is the column that is present in this common table expression, fine, in this temporary table. Okay, so let me run this and you will find the information of all the employees that are having their salary greater than the average salary. Fine. So when I write join here, it is basically the inner join. Fine. So we have average salary as 65,000, and the name of the employees, the employee ID and the salary, which are having greater than 65,000, we can see on the screen, right? So I use this with clause to compute the average salary first, fine, and then use the main query to get the information of the employees that are having salary greater than the average salary of all the employees. Fine. ठीक है, चलिए अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए. ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो आप ध्यान से देखिएगा. ठीक है, अभी हम लोग एक नया टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू क्रिएट द टेबल सेल्स विद स्टोर आईडी, स्टोर नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, cost, and inserting these many values into this. Right. Let's see the data. Okay. So you can see the store ID and the store name is repeating, okay, in this table. Right. And we have products, quantity, and cost. This is cost per unit. Fine. Okay.
So if I need to find total sales for each store, okay, so total sales for each store के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे स्टोर आईडी के लिए ग्रुप बाय करना पड़ेगा और सम करना पड़ेगा कॉस्ट निकालने के लिए. फाइन, कॉस्ट का सम करना पड़ेगा और ग्रुप बाय करना पड़ेगा स्टोर आईडी से. फाइन, सो आई एम डूइंग दिस हियर. So I am selecting s dot store id sum. I'm using aggregate function here. S dot cost का हम लोग sum कर रहे हैं and then I'm giving an alias name here total underscore sales underscore per store from the sales table and aliasing sales table as S and then group by the store ID. Fine. So let's see the result. Okay. So we have store ID 1 and total sales of this store ID 1 is 3280. Right. And likewise for all other stores. Okay. अभी मुझे क्या करना है, now I am going to find out the average sales per each store. So what I need to do, the same query, only need to change the aggregate function name here, right? Here it is sum, I need to take it as average. Fine, same thing, no doubt in this, right? We have discussed this several times in the previous classes, correct? Okay. So this is the average per store. So for store ID 1, we have average sales as 1093. Right? अभी find average sales with respect to all stores. अगर मुझे average sales निकालनी है, ओके, सारे स्टोर्स का एक साथ लेके, ठीक है, तो क्या करेगा, ये इन सबको ऐड करेगा एंड डिवाइडेड बाय 4 कर देगा, ऐसे ही एवरेज निकालता है. ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक सब क्यूरी लिखा है. दिस इज द बेसिक सब क्यूरी. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट बेसिक सब क्यूरीज. Okay, that will be written in one of the main query. Okay, so first I write this sub query here where I am calculating the total sales per store. This query that is selected at my screen is same as above that we discussed here. Right, find total sales per each store. Right, these both are same, correct? This one and this one. Okay, so it gives me the total sale per store. Now when I get this total sale per store, then I need to find out the average of this total sale per store. Okay, and then I am giving the name as average sale for all stores. So first I am doing this aggregate function sum for each of the store that are present, and then afterwards I am calculating the average for all of them. Correct? So let me run this. Okay, so average of all stores is 3290. Okay, now find stores whose sale were better than the average sales across all stores. अभी मुझे ये वाला क्यूरी लिखना है. ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ज्वाइन लगा सकती हूँ, बट this will be a complex query and it will take time to write this and to understand the logic what is happening here. Okay, it is using inner join. Fine. तो अभी हमें वो स्टोर्स निकालने हैं जिनका सेल्स बेटर है एवरेज सेल्स से. एवरेज सेल्स कितना है, 3290, ये हम निकाल चुके हैं अभी. ठीक है, चलिए, तो हम इसको एक कंबाइन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, विद क्लॉज के साथ. ठीक है, तो एवरेज सेल्स जो है सारे स्टोर्स का 3290 है. इससे ज्यादा कौन से स्टोर्स हैं जिनका सेल्स इससे ज्यादा है, तो वो हमें निकालना है अभी. ठीक है, चलिए, तो इसके लिए विद क्वेरी लिखते हैं. तो हमने क्या किया, पहले हमने विद क्लॉज में एक टोटल सेल्स कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया. ठीक है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द sales of all the stores and we are summing it and then we are group by. Okay, we are group by it by store id, right? Same thing we have done above. ठीक है, वो मैंने आपको टुकड़ों में बताया कि कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे मैं विद क्लॉज के साथ उसे कंबाइन कर रही हूँ और फिर एक मेन क्वेरी लिखूंगी जिसमें विद क्लॉज का रिजल्ट जो है उसे यूज करूंगी. ठीक है, तो पहले क्या किया, टोटल सेल्स निकाला. ठीक है, एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया टोटल सेल्स के लिए, फिर उसके बाद कॉमा करके एक और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया है विद इन द सेम विद क्लॉज वेयर आई एम फाइंडिंग आउट द एवरेज सेल्स
but this average sale is not for one particular store. It is for all the stores. So when I am calculating average sale for all stores, I need the total sales per store, right? And because it is for all stores, there should not be any need of group by, correct? Okay, so I think this is clear to you all what I am doing here. First, creating one common table expression as total sales, calculating the total sales per store, and then one more common table expression as average sales. But this time it is not for each store, it is for all the store, combining all of them, right? तो अभी जो टोटल सेल्स और एवरेज सेल्स मैंने यहाँ पे दो विद क्लॉज के साथ टेम्परेरी टेबल्स बनाई है, इनका मैं अपनी मेन क्वेरी में अभी यूज करने वाली हूँ. Select star from total sales. So I am using this total sales. I am selecting all the columns that are present in this total sales. What are the columns that are present in the total sales? Store ID, then sum of the cost. Okay, so it is for total sales per store. Fine, and then I am joining it with this average sale, this temporary table, average sales. Okay, on which condition? The condition is total sales dot total sales per store. Okay, so total sales में जो मेरे पास total sales per store कॉलम आया है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब बिगर होना चाहिए. It should be greater than average sales. Average sales का जो average sale for all store कॉलम है. Fine. Okay, किसी को कुछ इशू है इस क्वेरी में? नहीं है, समझ आ गया? ठीक है, इसे रन करते हैं फिर. Okay, so now we have store ID 3 and store ID 4 whose total sales is greater than the average sale of all the stores combining together. Okay, so we are using with clause here, okay, to make two different common table expression, and then again using the results of those common table expressions that are giving us the temporary tables in the main query. Fine. Is it understandable? Okay, no replies, then I am assuming it as yes. Fine. So let me move forward. If anyone has any doubt, you can ask now. No. Okay. Thanks. Let's move further then. What is the next thing? Okay. So the next topic is some date time functions that we use in our SQL are, you can see at my, some of them are at my screen. Like if I want to get the get date, so get the current date time. Okay, so get date function is used to get the current date time. Okay, so same thing for get UTC date, it will get us current UTC date time. Fine. In SQL Server, it runs local at the server's local time, and for UTC date, it is like regardless of the server time zone, it gets us with the UTC time. Okay. Now, if I want to add 7 days to the current date, what I need to do? Okay, let me simultaneously run these queries so that you can get how they will work. Okay, so current date time, it is giving me the current date time of the server, that is SQL Server. Fine. So this is a function that we can use to get the current date time. Okay. Now the next one is get UTC date. Okay. Now afterwards, if I want to add 7 days to the current date, what I need to do? I need to use date add function. Okay. And if I need to make some changes, like I need to add 7 days, so I have to mention some of the parameters for this function, like 7 days, so need to make it like 7 here, and then get date. Get date is to get the current date.
Okay, so it will give us the date that is present after 7 days from today's date, right? So what will be the date after 7 days? It will be 10th May. Fine. If I want to find out the year from a date, okay, so I am mentioning here this date, 2nd of May 2025. Then I need to use date part function here and need to give year in the argument and then the main date that I am using. Okay, now it should give us 2025. Okay, and date name month. Okay, so if I am mentioning month here, so it will give me the month that is present in this date, so it should be May. Okay, yeah. Okay, now difference in days between the two dates. If I need to calculate the difference in days, like the duration in terms of days between the two dates, then I use date diff function. This we will use in Power BI also. Okay, so in Power BI for DAX we use dat diff, and if we go with the Power Query editor we need to use duration dot days. Okay, so what it will do, it will calculate the number of days that are present between these two dates. This is the starting date and this is the ending date. Okay, so days between will calculate the days between these two dates. Okay, so the days between these two dates is 121. Okay, now I am going to find the first day of month. Okay, so I need to add this date, add day 1 minus day get date. So it is like need to check what I can write here. So for first these functions, these get date and get date function, what they will return? They will return the current date, right? Okay, and then we need to add. So these are some complex date functions. As date add I already shown you here. Okay, this, so this will the days we need to add or something else. If I need to add something else, like if I need to add month or something else, then we can change the parameters accordingly. Fine, so here is the list. Fine, now to format some date, okay, like here it is select end of month get date, then get date will be the current date and we can get the EU month. EU month is the end of the month. Fine, so from the current date it will get us the end of month May, right? 31/05/2025. Okay, now I want my current date to convert in some format. Okay, so it is in now year and then the month and then the days. So some formatting I can apply and then I will convert this. Okay, so it is the same as like, so if I mention here something different, it will convert it as well. Okay, so here the year and month and date, this format date is present. For this I need to use 120. Okay, so if I will apply some different number here, I can get some different uh, format of the date. Okay, now, okay, if I want to fetch the weekday of the current date, okay, so I need to use date name. As we have already seen that for month name we need to use date name, but we have to mention here month in the argument, right? And then get date, that gives us the current date. Okay, so it will give us the weekday of the current date. Okay, so today is Saturday. Fine, so this is the very small list, but you can find the never ending list here. I will show you the I will share the link to you people. Okay, you can take it from here. So if you want to read about the documentation of some date time functions, and some different functions are also present in this documentation, you can go through it, and whenever what is required you can use it. Okay.
Fine. So any doubt till now? Let me move further then. Okay, so how we can clean our data and how we can transform our data through a SQL. Okay, so some of the concepts that we have already studied, we are using them in this example, so you can get an idea how this way these functions work simultaneously, one after the other, to get the data clean and transform it and getting the required values that we want for our charts. Okay, should we start this data cleaning and transformation? Yes, ma'am. Okay, so first we need to create one table, sales data, where sales ID, sales date, product name, quantity, price and reason are present, and then I'm going to insert some data into this based upon the columns that are already mentioned here. Okay, okay, so the first step for data cleaning and transformation is handle null values. So somewhere in our data we have null values, right? So if we want to remove these null values, okay, so you can see for quantity we have null value for this sales ID 4. Okay, and also for price we have null value for sales ID 5. So we need to replace these null values, or we need to handle this. How we can do? So replace null values in quantity with 0. ओके, सो जहां पर भी क्वांटिटी में जीरो है वहां, सॉरी नल है, वहां पे हम जीरो प्लेस करने वाले हैं, और जहां पे भी प्राइस है वहां पे हम क्या करने वाले हैं, वहां पे एवरेज प्राइस ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट हम उसे प्लेस करेंगे. ठीक है, क्वांटिटी अगर नल है तो जीरो हो जाए वहां पर, और अगर प्राइस कहीं पर नल है तो एवरेज प्राइस ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट. ओके, तो जितने भी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उनका जो एवरेज प्राइस है वो वहां पे रिप्लेस हो जाए नल की जगह. तो उसके लिए हम क्वेरी लिखने वाले हैं. ओके, so to update the data that is already present, we need to use update clause that we have seen in the previous classes. Okay, so there should not be any doubt. I think update sales data is the name of the table, and then we need to use the set clause to set the value of a column. Okay, so set quantity equals to 0, and then we are filtering the data. We are giving a condition like where we need to use this quantity as 0, where the quantity is null. Okay, data, let me show you the sales data. Okay, so you can see for sales ID 4, quantity is null, so it should be updated by 0. Now for store ID 4, the quantity is 0 now. Null has been replaced by 0 here. Okay, if I want to replace the value of price where it is null, I want to replace it with average, okay, of the product. Fine. So update sales data, set price equals to, here I am using one subquery within the parenthesis. Okay, select average of price from the sales data as ST, where
द SD.product name, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग एवरेज प्राइस को रिप्लेस करने वाले हैं वही प्रोडक्ट नेम हम लोग देखने वाले हैं। ओके, इक्वल्स टू सेल्स डेटा डॉट प्रोडक्ट नेम एंड SD.price is not null. Fine. One parenthesis has been ओके और यहाँ पे हम लोगों ने एक और प्राइस वेयर प्राइस इज नल का कंडीशन लगाया है। ये क्यों लगाया हमने? ये वहीं पे रिप्लेस करेगा हमारी प्राइस को जहाँ पर नल है वैल्यू, ठीक है। तो स्टोर ID 5 के लिए हमारे पास नल वैल्यू थी, तो वहां पे हमें एवरेज मिल जाएगा। ओके, और एवरेज जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें जो प्राइस का नल वैल्यू था वो वाली रो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई हुई है कि SD.price is not null, ठीक है। तो इस वैल्यू को वो जब एवरेज काउंट करने एवरेज कैलकुलेट करने के लिए लेकर आएगा तो सम तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही नल है। लेकिन जब उसे डिवाइड करेगा तो उस वैल्यू को भी काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, आई हैव रन दिस ऑलरेडी। Okay, so you can see this sales ID store, this sales ID 5 has been replaced 25 in the price. Okay, okay, now add a new column total sales which is the product of quantity and price. Okay, अभी मुझे यहाँ पर एक और नया कॉलम बनाना है रीजन के बाद, and it should be like quantity multiplied by price and the name of the column will be total sales. Fine, so I am going to calculate the multiplication of these two columns quantity and price within a new column named total sales. Fine, तो अभी एक नया कॉलम बनाने के लिए हमें ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब टेबल को हम जब वैल्यूज को हम अपडेट करते हैं, किसी कॉलम को अपडेट करते हैं, कॉलम की वैल्यूज को अपडेट करते हैं, तो हम अपडेट स्टेटमेंट और उसके साथ सेट का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें एक टेबल का स्ट्रक्चर ऑल्टर करना है या अपडेट करना है तो हम ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो अभी हमें टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक कॉलम ऐड करना है, तो ऑल्टर टेबल के साथ हम लोग ऐड क्लॉज का यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो ऑल्टर टेबल सेल्स डेटा एड टोटल सेल्स। ओके, सो टोटल सेल्स हमने यहाँ पे नया कॉलम का जो नाम होगा वो दिया है, उसके साथ द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम एंड सम कॉन्फ़िगरेशन लाइक 2 decimal places. Okay, after a decimal there will be 2 places and before decimal there can be 10, something like that. Okay, so this table has been altered and now we need to update the sales data. ओके, अभी जो आपने टोटल सेल्स कॉलम इसमें ऐड किया है उसमें भी वैल्यूज नहीं आई है। यहाँ पे हम लोग एक बार टेबल को देख लेते हैं। Only the column has been added. Okay, so all the values are null. Fine, now we need to update these null values with quantity multiplied by price for each and every row. Okay, so we are using update. Why we are using update here? Because we are making changes in the column values, right? If we need to make change in the table structure, then we have to use alter table. But if it is at the column level, then we need to use the update statement with the set clause. Okay, the set keyword. फाइन, तो अभी हमारे पास क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस एक टोटल सेल्स कॉलम आ गया। ओके, so we have clean our data where the null values are present. We have replaced them and we have added one more column here, total sales, and we calculate the values for each and every row for total sales. Now we are using a window function here. Why we are using? We need to calculate the cumulative sales for each region. ओके, अभी मुझे क्या करना है, जो रीजन कॉलम है यहाँ पे मुझे हर रीजन के लिए क्यूमुलेटिव सेल्स निकालना है। जैसे कि नॉर्थ रीजन के लिए आप देख रहे हैं मेरे पास 2 रो प्रेजेंट है, साउथ के लिए भी 2 है और ईस्ट और वेस्ट के लिए 1 ही है, ठीक है। तो अभी मुझे क्यूमुलेटिव सेल्स निकालना है हर रीजन का, तो उसको मैं कैसे निकाल सकती हूँ? ठीक है, इसमें हम एक विंडो फंक्शन का यूज कर रहे हैं
देखिए अभी विंडो फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हम लोग सम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन है ये, और उसके साथ ओवर क्लॉज का यूज करते हैं, और ये पार्टीशन हो जाएगा डेटा हमारा रीजन के थ्रू, मतलब सारे रीजन का अलग अलग डेटा हो जाएगा, और फिर उसमें वो सेल्स डेट से ऑर्डर बाय करेगा। ओके, तो आप देखिए इस क्वेरी को एक बार से रीड करके मुझे एक बार बताइए कि जो मेरी पहली और दूसरी रो आएगी, मतलब अगर मैं रीजन देखूं नॉर्थ, ओके, नॉर्थ रीजन देखती हूँ अगर मैं, और उसमें मैं ये देखना चाहती हूँ कि नॉर्थ रीजन में पहली रो कौन सी आएगी, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या डेटा आएगा पहली रो में नॉर्थ रीजन के लिए। Health ID 1 0. सेल्स आईडी Health ID 1 0, ma'am. cumulative so it what it does, it sum of all the total sales that are present over the partition by reason, okay, and then it will order by the sales date. Okay, so let's run this. Okay, so you can see for east we have one row, so we have got this here. Then for north we have 155 and 175. So what it does for 155, it is 155, so no data is like we need to accumulate, okay, we need to sum up, okay, afterwards it will find one more um, north region, and then it will do the summation of these two, right, because for north we have these two as total sales, okay, then we get 330 here, fine, okay, same with the south region 125, and then the cumulative of these two for south, fine. Ma'am, it's taking region alphabetical order, no? No, Okay. it is like order by sales date, okay, reason can be we can say that we haven't mentioned reason here, okay, order by, so we can't say that it is taking reason in alphabetical order, okay, it is order by sales date, fine, within the same reason, okay. So if you can see for north, first January will be the first date, and then afterwards 5th January will come, okay, so we need to check within the same region, okay, same with south, 2nd January, and then the 6th January, right, okay. Case statement, okay, so we have already learnt about case statement in the previous class. So what we are doing here, we are classifying sales into categories based on the total sales, okay, so total sales we have here, fine. So what we are doing here, we are making one more column here in the select query, that's name is sales category, okay, and it is checking when the total sales is less than 100, then in sales category what value we will get low, but when the total sales is between 100 and 500, we will get the value as medium, otherwise it should show us high, fine. So we will get here one more column sales category, okay. Now you can see here the sales category. If it is less than 100, then low, otherwise between 100 and 50, then medium, else high. So we have no data for high. So we have no column value high in the sales category column. Okay. Yeah.
Yeah, can we move forward? Hello. Are you people there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can we move forward? Yes, ma'am. Okay. Screen is visible, right? Yes. Now, so we are going to study some operators that are present in SQL. Okay. Now we are going to create one table, table 1 and then table 2. And we will insert the data here. So what all these operators are? Okay. So one operator is all operator, and then second one you can say any. Okay, so and we will also see sum, and we will see exist, we will see union. Okay, so we'll see example of all these operators in SQL by the help of these two tables. Okay, table 1 and table 2. Okay, so let me create these tables and insert the data, and then we will first see the all operator here. Okay. The all operator is used to compare a value to all values in another set of values. So it will give us the result only when the result is true for all the values that we are comparing. Okay. So if I want to find the names of IDs that are greater than all IDs in table 2, so we have table 1 and table 2 with the smaller set of data. Okay, so we have ID in table 1 and ID in table 2 as well, but the names are present in table 1 and description is present in table 2. Okay, so in this query where I am using this all operator, what I am finding out, I am finding the names with IDs greater than all IDs in table 2. So select the names from the table 1 where ID of table 1, okay, this ID of table 1 should be greater than all the IDs that are present in table 2. Fine. So is 1 greater than all of them? No. Is 2 greater than all of them? No. Is 3 greater than all of them? No. So what will be the result here? There should not be any result, right? Yes. Getting? Yes. Got it. Okay. Now, next we will see any operator. Fine. So what any will do, any is used to compare a value to any value in another set of values. So to find out the names with IDs greater than any ID in table 2. ठीक है, किसी भी आईडी से बड़ा है अगर टेबल 2 में आईडी, तो फिर हमें वो आईडी मिल जाए. ठीक है, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल 1 वेयर आईडी शुड बी ग्रेटर देन any ID that is present in table 2. Okay. Okay. So 1 is 1 greater than any ID that is present in table 2? Any ID? 2, 3 No. and 4? No. No. Okay, so 1 should not be in the resultant table, right? Yes. But if we see 2 here, is 2 greater than any ID in table 2? Yes, 2 is greater than 3 and 4, correct? Yes. Yeah. So in our result set, we should get 2. Okay, and the name should be Bob, right? Because corresponding to ID, we have name here as Bob and we are selecting name in our table. Fine. Okay. Same for 3. Is 3 is greater than any of them? Yes, it is greater than 2. Fine.
So we should get Bob and Charlie in a resultant table. But it is not giving us Bob. Why? It is greater than, not greater than equal to. Yeah, it is greater than, not greater than equals to. Okay. ओके नाउ सम की बात कर लेते हैं. सम एनी की तरह ही वर्क करता है, तो मुझे नहीं लगता ये सेम ही एग्जांपल है, बस हम एनी को सम से रिप्लेस कर देंगे इधर. ओके नाउ exist. The exist operator is used to test for the existence of any record in a subquery. Okay, so subquery is what we have written here, this subquery that is present in the parenthesis. So it will give us, exist will give us if there is any matching ID present in table 2. So we are writing here select star from table 2 where table1.id equals to table2.id. Okay. Fine. So we need to select the names from the table 1 where exist. Exist means we need to check for the matching IDs. Okay, because it is giving here the filter condition is table1.id equal to table2.id. If there exists something, then we will get the result. तो जहां भी हमारे टेबल 1 और टेबल 2 के आईडी सेम है वो सारे रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे. फाइन. So for Bob and Charlie we have 2 and 3 IDs that are common in both the tables. Okay, 2 and 3. Okay, and 2 and 3 also present here. So Bob and Charlie are the names that we are getting in the resultant table. Okay. Okay, now the most important operator, that is union. The union operator is used to combine the result set. I think you people have already read about this set theory in mathematics. We all know. So in set theory, what union operator does, the same thing it follows here in SQL also. Okay, so it's used to combine the result sets of 2 or more select statements. It removes duplicate rows between the various select statement. तो अगर हम खाली union का use करते हैं तो जो duplicate rows होती हैं वो वहां से delete हो जाती हैं, मतलब वो remove कर देते हैं. लेकिन अगर हमें duplicate rows भी हमारे result set में चाहिए, दो सेट्स को कंपेयर दो सेट्स को कंबाइन करने के बाद तो हमें यूनियन ऑल का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो भी एक ऑपरेटर है, उसका एग्जांपल अभी हम बाद में देखेंगे, पहले यूनियन का देख लेते हैं. ठीक है, so here we are combining the IDs from both the tables. Okay, so select ID from table 1 and then union select ID from table 2. So we will not get the duplicate rows, the duplicate IDs that are present in both the tables. Okay, so what are the duplicated ones? I think 2 and 3 are the duplicated ones, so we are not getting them again. Okay, so we will get them only once. Okay, so 1 2 3 4 they are not repeating. Okay, if we use this union operator, it is similar to union but it includes the duplicate rows as well. Okay, so let's see the result. Okay, so you can see 2 and 3 are repeating in table 1 and table 2 both. So we are having 2 and 3 two times. Okay, because it is not removing the duplicate rows. Union operator was removing these two rows, so we get 1 2 3 4 only, but this time we get 2 and 3 two times in the resultant table, right? Okay, so there are some rules and limitations for to use union. Okay, so when we write select statement for the two result sets and we are going to union them,
then the select statement must have the same number of columns. Okay, so you can see here the columns, number of columns are same, like id and name 2, id and description 2 columns. Okay, and also if I will write here star, then it will work. Okay, but here in this I am only using one column, so the number of columns that I am selecting in the query of union, they should be same in both the queries, before the union and after the union. Okay, if the first query select 2 columns, then the second must also select 2. Now same data types and compatible types. तो यहाँ पे मैंने जो id select किया है यहाँ पे, तो इनका या तो सेम डेटा टाइप होना चाहिए या फिर ये compatible होने चाहिए. ठीक है, तो ये जैसे id का int है डेटा टाइप, तो दूसरे वाले id का भी int ही होना चाहिए. ठीक है, फिर बात कर लेते हैं. जैसे इसमें अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, तो हम लोग यूनियन नहीं कर सकते किसी वेरकेयर कॉलम के साथ किसी डेट टाइम को. ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट id फ्रॉम टेबल 1 यूनियन ऑल सेलेक्ट डेट टाइम, अगर मेरे पास कोई कॉलम होता, सेलेक्ट डेट टाइम फ्रॉम टेबल 2, ये करती हूँ, तो ये वाला मेरा वर्क नहीं करेगा, इसमें एक एरर आएगा, क्योंकि कॉम्पिटेबल टाइप्स नहीं है जिन्हें हम यूनियन कर रहे हैं. यूनियन करने के बाद हमें एक कॉमन कॉलम मिलता है टेबल में. ठीक है, तो इसका जो डेटा टाइप है वो एक ही होगा, और वो डेटा टाइप इसलिए सेम होना चाहिए दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट्स का. ठीक है, या जितने भी सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उन सब का. ठीक है, चलिए अब हमने जो कॉलम्स इसमें रखे हैं वो मैच करना चाहिए. ठीक है, कॉलम ऑर्डर मैटर्स. अच्छा, मैं अगर सेलेक्ट करती हूँ यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम टेबल 1 यूनियन ऑल सेलेक्ट आईडी कॉमा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम टेबल 2, it will work. Okay, but if I interchange the order of the columns like select description comma id from table 2, then it will not work. Okay, so order of the column matters, क्योंकि ऊपर वाला जो select है यूनियन ऑल से पहले वाला, उसमें मैंने id कॉमा नेम रखा है, तो सेम कॉम्पिटेबल टाइप्स या सेम टाइप्स का मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट, दूसरा वाला सेलेक्ट स्टेटमेंट है, उसमें मुझे कॉलम के नेम देने पड़ेंगे सेम ऑर्डर में. ठीक है, ओके. यूनियन ऑटोमेटिकली रिमूव्स डुप्लीकेट्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है. अगर हमें डुप्लीकेट्स नहीं हटाने, डुप्लीकेट्स भी हमें हमारे रिजल्ट सेट में चाहिए, तो फिर हमें यूनियन ऑल करना पड़ेगा. इसका एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं. फाइन, एनी डाउट्स? No, no. Okay, so now we are going to study about the acid properties in SQL and the types of SQL languages. ठीक है, और फिर हम उनके examples देखेंगे. तो acid properties जो SQL में यूज होती हैं वो basically transactions के लिए यूज होती हैं. ठीक है, they ensure the reliable processing of database transactions. ठीक है, तो acid का basically यहाँ पे meaning है, बहुत important question है और ये इंटरव्यू में मोस्टली पूछा ही जाता है कि क्या सीक्वल की प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होती हैं. तो वो आप एसिड प्रॉपर्टीज के नाम से याद रखिए. यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर एटोमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन, D फॉर ड्यूरेबिलिटी. ओके, एंड व्हाट दे ऑल मीन वी विल डिस्कस. ओके, सो
हाँ, तो पहले देख लेते हैं एटोमिसिटी और फिर उसका डिस्क्रिप्शन और एक एग्जांपल है हमारे पास। अ ट्रांजैक्शन इज ऑल और नथिंग इफ वन पार्ट फेल्स। जैसे एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो अगर उसका एक पार्ट फेल हो गया तो सारा की सारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन में 2 या 3 पार्ट्स है, पहला वाला रन कर गया और जो दूसरा वाला है उसमें कुछ एरर आ गया तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, ठीक है, तो वो वहां पे रुक जाएगा। तो जो पहला वाला पार्ट था ट्रांजैक्शन का उसे रोल बैक होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ ट्रांसफर डेबिट फ्रॉम ए एंड क्रेडिट टू बी, ठीक है, ऐसा हो रहा है कि ए से डेबिट हो रहा है और बी में क्रेडिट हो रहा है, फाइन। इफ क्रेडिट फेल्स, अगर क्रेडिट फेल हो जाता है, ठीक है, तो पहले डेबिट होगा ए में से, फिर वो जाके बी में क्रेडिट होगा। ए एंड बी आर टू अकाउंट्स, यू कैन एज्यूम, ओके। सो इफ द क्रेडिट फेल्स देन डेबिट शुड ऑल्सो रोल बैक, क्योंकि डेबिट पहले हो चुका है और उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया था। इट हैज बीन ran successfully, but due to the problem in the transaction that is crediting to B account, the debit that has been already successful, it should be rolled back. Fine, समझ आ गया ये सबको? Ma'am, can you repeat? Pardon? Yes, ma'am. Okay. Now come to the part C. C is consistency. Okay, transaction must leave the database in a valid state following all rules and constraints. Okay, if there's a rule like salary greater than 0, inserting a negative salary is blocked. Okay, तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हमने हमारे डेटाबेस में एक ऐसा रूल बना दिया है कि सैलरी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा था ना, उसमें हम कंस्ट्रेंट्स डालते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू का कंस्ट्रेंट है, चेक का कंस्ट्रेंट है, तो हमने एक चेक कंस्ट्रेंट बना दिया है कि सैलरी वाला जो हमारा कॉलम है उसमें हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू जानी चाहिए, मतलब नेगेटिव वैल्यूज उसमें अनअक्सेप्टेबल है। तो अगर किसी यूजर ने बाय चांस या फिर किसी सिस्टम ने कुछ करने, मतलब कुछ ऐसा हमारा डेटाबेस को क्रैश करने के लिए ऐसा कुछ डाल दिया है कि सैलरी में जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हो रही हैं, तो फिर वो उसे ब्लॉक करे, ठीक है। तो जो कंस्ट्रेंट्स हमने डाले हैं उसके बेसिस पे हमारा सिस्टम वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे रूल्स और कंस्ट्रेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है I for isolations. Okay, so transaction occur independently. जो transactions हो रहे हैं वो independently occur होनी चाहिए। अगर वो same time पे run कर रहे हैं तो भी independently occur होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। सो 2 यूजर्स बुकिंग द लास्ट शीट शुड नॉट बोथ सक्सीड, ठीक है। अभी मान लो कहीं पर एक ही सीट है और हम लोग कुछ टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो क्या करना है, वहां पे हमें ये देखना है कि अगर 2 पर्सन है, 2 यूजर हैं, वो लास्ट सीट को बुक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो दोनों का बुक करते, क्योंकि वो सेम टाइम पर हो रहे हैं, तो वो चीज हमें चेक करनी पड़ेगी, वो दोनों आइसोलेटेड होने चाहिए, ठीक है। नाउ द ड्यूरेबिलिटी, वंस कमिटेड चेंजेस आर परमानेंट। एक बार अगर हमारा कुछ चेंज हमने किया और वो कमिट हो गया है तो फिर वो रोल बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेंजेस परमानेंट रहने चाहिए अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है उसके बाद भी, ठीक है। वंस कमिटेड चेंजेस आर परमानेंट इवन इफ अ क्रैश occurs. After a successful transfer, data remains saved even after power failure. अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन में ऐसा हुआ कि सक्सेसफुली वो ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, एटोमिसिटी वाला रूल भी फॉलो हो गया है, ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुल, तो जो डेटा उसमें सेव हुआ है अगर उसके बाद पावर फेलियर हो जाता है तो उसमें वो चीजें सेव्ड होनी चाहिए। एक बार कमिट हो गया तो वो ड्यूरेबिलिटी उसमें रहनी चाहिए। हमारा जो चेंजेस हमने अपडेट किए हैं, जो अपडेशंस आए हैं ट्रांजेक्शन के बाद दोनों अकाउंट्स में, तो वो पावर फेलियर के बाद भी सेम रहना चाहिए। सो इट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी, राइट। तो अभी ये चारों प्रॉपर्टी आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। सो इसमें कुछ ऐसा सिंटेक्स वाला या कुछ क्योरी करके दिखाने वाला नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली बात है, और जब इंटरव्यू में पूछा जाए तो हमें भी ऐसे ऐसे ऑरल ही बताना पड़ता है, राइट।
ठीक है, आगे चलते हैं अभी। टाइप्स ऑफ सीक्वल लैंग्वेजेस, ठीक है, तो ये चीजें ना हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन बस अभी हम ये देख रहे हैं कि कौन सा वाला हमारा क्लॉज या फिर कौन सा वाला कीवर्ड सीक्वल का जो हमने पहले पढ़ा है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो बस हम उन्हें अब कैटेगराइज कर रहे हैं, ताकि उनका यूज वही है जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो हम सारा देख चुके हैं कि कैसे क्या यूज होता है विद बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं उनके। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, इसलिए वाला टॉपिक मैंने लास्ट में लिया। सारे हमने जो भी सेलेक्ट, क्लॉज और डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप, इंसर्ट, अपडेट, ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। तो कौन सा किस कैटेगरी में आता है बस एक बार वो देखना है, तो जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हम डायरेक्टली उसे आंसर कर सकें। ठीक है, तो SQL is categorized into different types based on their roles in data operations. So first is data definition languages, जिसे हम DDL भी कहते हैं. So data definition language used to define and manage schema, structure of the database. अभी हम structure की बात करें, जैसे हम लोग टेबल का कुछ structure change करते हैं तो हम alter table use करते हैं, लेकिन अगर हम किसी कॉलम में कोई वैल्यू चेंज करें तो अल्टर टेबल यूज नहीं करते, अपडेट यूज करते हैं। तो अपडेट कमांड जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में नहीं आएगा, ऑल्टर डेटा डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि इसमें हम स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। फाइन, सो अभी आप एग्जांपल देख लीजिए, जो क्रिएट होता है वो हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में आता है। क्रिएट टेबल्स, क्रिएट व्यूज, अभी व्यूज क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन क्रिएट टेबल तो आपको पता है, ये तो हम बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं। फाइन, उसके बाद ऑल्टर की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम ऑल्टर टेबल का यूज करते हैं तो हम टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, या तो हम किसी कॉलम को मॉडिफाई करते हैं या फिर किसी कॉलम को ऐड करते हैं। मतलब अगर हमें किसी कॉलम का डेटा टाइप ही मॉडिफाई करना है तो हम ऐड की जगह यहाँ पे मॉडिफाई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले से हमारे पास कॉलम प्रेजेंट नहीं है, हमें ऐड करना है, तो फिर हम ऑल्टर टेबल के बाद यहाँ पे ऐड का यूज करते हैं। ओके, सो इट इज यूज फॉर मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। फाइन, नाउ ड्रॉप ये क्या करता है, ये हमारी पूरी टेबल को या पूरे की पूरे डेटाबेस को ही उड़ा देता है। मतलब वैल्यूज और रोज और कॉलम्स वो सब तो जाएंगी ही वहां से, टेबल का स्ट्रक्चर भी चला जाता है ड्रॉप से। ठीक है, तो हमें अगर टेबल में कुछ नई वैल्यूज डालनी है तो हमें दोबारा से उस टेबल को क्रिएट ही करना पड़ेगा और फिर उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। राइट, फिर बात कर लेते हैं ट्रंकेट की। ट्रंकेट क्या करता है, ये सारे रिकॉर्ड्स को वहां से रिमूव कर देता है। ठीक है, और इसमें रोल बैक नहीं होता है। ओके, जैसे ड्रॉप है शायद हम इसे रोल बैक कर सकते हो, लेकिन ट्रंकेट को नहीं कर सकते हैं। एक बार रिकॉर्ड्स रिमूव हो गए तो इससे फिर हम रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, वो कमिट हो जाता है। अभी देखते हैं फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस को। इसमें हमें डेटा जो हमारी टेबल्स के अंदर प्रेजेंट है उसे कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेटा प्रेजेंट मतलब डेटा डालने के लिए टेबल में इंसर्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू डेटा, और इसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इज आवर टेबल एंड देन वैल्यूज। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स अपडेट। अपडेट का हम लोग कई बार इसी सेशन में, इसी लेक्चर में मैंने आपको अपडेट का यूज बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू बता दिया। एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे हमारे पास एक एज कॉलम है और वहां पे हमें एज में ना 20 सेट करना है, तो अभी ये वाला जो क्वेरी है ये स्टूडेंट टेबल में जो एक एज कॉलम है वहां पे सारे रोज में 20 सेट कर देगा। बट इफ यू वांट टू फिल्टर इट देन वी नीड टू यूज वेयर क्लॉज, कि एक स्पेसिफिक रो में ही हमें यहाँ पे एज को 20 डालना है, तो फिर हमें वेयर क्लॉज का यूज आगे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिलीट। डिलीट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है, और वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स हम वेयर के साथ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 एग्जाम्पल में लिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट टेबल में से वो वाले रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा जहाँ पे आईडी जो है 1 है। ठीक है, अगर हम वेयर का यूज नहीं करते हैं तो फिर ये टेबल में सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा, क्योंकि वहां पे हमने कोई फिल्टर कंडीशन मेंशन नहीं की है। Okay, next, then data query language. So this is used to retrieve the data. तो डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम शुरू से ही सेलेक्ट का यूज कर रहे हैं, तो ये एक ही होता है। ओके, सो क्वेरी रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। राइट, सिंपल। अभी फिर होते हैं उसके बाद में डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस।
इनका यूज बेसिकली ट्रांजैक्शंस में ही होता है, इसलिए हम लोग जब सीक्वल बेसिक्स और एडवांस पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेरी करने के लिए या एग्जांपल्स देखने के लिए इनका यूज नहीं करते हैं। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ग्रांट का क्या मतलब होता है। सो द ग्रांट क्लॉज इज यूज्ड टू गिव एक्सेस राइट्स, ओके, ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट्स टू यूजर वन। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट्स टेबल के ऊपर एक, मान लीजिए हमने एक रोल स्पेसिफाई किया हुआ है यूजर वन, तो ये उसे क्या बोलते हैं, ग्रांट कर देगा, परमिशंस ग्रांट कर देगा यूजर वन को। ओके फाइन। रिवोक टेक बैक एक्सेस राइट्स, अच्छा ये ग्रांट जो है वो एक्सेस राइट्स देने के लिए है और रिवोक जो है वो टेक बैक करने के लिए। फाइन, तो ये एक्सेस राइट्स को वापस ले लेगा रिवोक। फाइन, सो वी नीड टू राइट इट एज रिवोक सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजर वन। तो हम ग्रांट कर रहे हैं तो टू यूजर वन, okay, but when we are taking it back, we are revoking, then we need to use from user one. Fine. अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग बिगिन, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस थी बेसिकली परमिशन को देने के लिए है। ठीक है, कि हम हमारे यूजर को क्या परमिशन देना चाहते हैं, रीड परमिशन देना चाहते हैं, राइट परमिशन देना चाहते हैं, मॉडिफाई करने देना चाहते हैं हमारा डेटा को। ठीक है, तो वो सब इसमें होता है। और ये ट्रांजैक्शन के लिए हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो बिगिन जो स्टेटमेंट है ये एक ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करता है, तो कहीं भी हम एक ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम लोग बिगिन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कमिट होता है, इट सेव्स ऑल चेंजेस मेड। ठीक है, तो जो भी चेंज हुआ है वो कमिट हो जाएगा अगर हम लास्ट में कमिट लिख देंगे तो। या हम चाहते हैं कि हमने जो क्वेरी के थ्रू हमने कुछ चेंज करा है तो उसको हम रोल बैक करें, तो वो हम फिर रोल बैक का यूज करेंगे उसके लिए। सो इट विल अनडू चेंजेस इन अ ट्रांजैक्शन। ओके, देन सेव पॉइंट, दिस सेव इंटरमीडिएट पॉइंट, सेव ट्रांजैक्शन, सेव वन। तो ये बीच में अगर हम हमारा ट्रांजैक्शन जैसे चल रहा है और कहीं पे किसी पॉइंट पे हम लोग उसे सेव करना चाहते हैं तो सेव पॉइंट का यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अभी इस एग्जांपल में इन्होंने सबको कंबाइन कर दिया है। इन्होंने पहले एक टेबल बनाया, अकाउंट्स टेबल, जिसके अंदर आईडी है, नेम है और बैलेंस है। ठीक है, फिर इन्होंने एक वैल्यू, यहाँ पे दो वैल्यूज इंसर्ट किए हैं आईडी 1 और 2 के लिए। फाइन, जिसका बैलेंस जो होगा 1 के लिए 5000 है, बैलेंस इट इज 4000। ओके, सो इट इज अपडेटिंग द बैलेंस। ओके, तो पहले जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं, इन्होंने ट्रांजेक्शन को बिगिन किया, यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन, and it is updating the accounts table and set the balance as balance minus 1000। ओके, तो जितना बैलेंस है उसमें 1000 कम हो जाएगा, जहां पे कि हमारा आईडी जो है 1 है। तो क्या होगा, आईडी 1 एलिस के लिए है, तो एलिस के अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा। ओके, दैट मींस 1000 beta this। okay, so it will become 4000 because in Alice where the name is Alice we have 5000 and we need to make the balance by subtracting 1000 from it। fine, तो अभी एलिस के अकाउंट में से यहाँ पे डेबिट हो गया इस ट्रांजैक्शन के थ्रू। फाइन, उसके बाद इन्होंने अपडेट किया है अगेन बैलेंस को, और वहाँ पे बैलेंस में 1000 को ऐड कर दिया है और बॉब के अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम लोग वेयर आईडी इक्वल टू 2 देंगे क्योंकि बॉब का आईडी 2 है। ओके, सो दिस ट्रांजैक्शन इज दे आर नाउ कमिटिंग दिस ट्रांजैक्शन बाय गिविंग कमिट कमांड। अब कमिट हो गया तो रोल बैक नहीं हो सकता, मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे अकाउंट्स में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो वहां से तो 1000 माइनस हो जाएगा और बॉब के अकाउंट में 1000 ऐड हो जाएगा। फाइन, ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस के बारे में बताया कि ये यूजर को एक्सेस राइट्स देने के लिए है, तो हम यहाँ पे एक हमारा रोल स्पेसिफाई किया हुआ है अगर हमने कि ये रीड ओनली यूजर है और उसको एक्सेस राइट्स वही दिए हैं कि सिर्फ वो रीड कर सकता है, तो फिर ये हमारे जो अभी करंट यूजर है उसको ये वाला रोल स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, ओके, सो दिस ग्रांट सेलेक्ट, दिस गिव्स द यूजर परमिशन टू रन सेलेक्ट क्वेरीज ओनली टू रीड द डेटा। जब हम सिर्फ रीड ही करवा रहे हैं डेटा को तो सिर्फ सेलेक्ट का ही यूज करेंगे, क्योंकि सेलेक्ट रिट्राइव करने के लिए बाकी कोई चेंज हमें नहीं करवाना है हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो ओनली सेलेक्ट क्वेरीज का यूज इसमें किया जाएगा। फाइन,
क्लियर है सबको? हेलो मैम। हेलो। Everything is clear up to now? Ma'am, can you repeat the acid properties in short, please? Okay. Okay. So here comes A. A is atomicity. Okay. Atomicity is basically whenever there is some transaction happening, if one of its part fails, then the whole transaction should be rolled back. Okay. If some of its part was already successful, then it should be rolled back also because it hasn't been completed. Like if we are debiting from account A and we are crediting to B, then once the debit has been done, then the credit will happen, right? But there is some issue. Let's say there is some issue in crediting to account B. Okay, so the debit that has been already done for account A should be rolled back. Okay, then the same amount should be placed or should go back to the account A. Fine. Let's say I withdraw some what I can say, I debit 1,000 rupees from account A and then credit Hello. Yeah, hello, sorry, there is some network issue at my end.
Let me share the screen again. Is it visible to you all? Yes, ma'am. Okay, so we were discussing about consistency. Okay, so we have mentioned some rule or constraint over our data that salary should be greater than 0. Then inserting a negative salary should be blocked. Fine. So negative values we can't insert. Now isolation. Transactions occurs independently even if run at the same time. अगर एक ही ट्रांजेक्शन है हमारे पास और वो अकर हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट दूसरे किसी ट्रांजेक्शन पे नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, जैसे हम लोग अगर सीट्स बुक कर रहे हैं और लास्ट सीट के लिए हम लोग हमारे पास 2 यूजर्स हैं, देन they should not both succeed. Okay, so it is called isolation. They should run independently. Fine. Now the durability. Once committed, changes are permanent even if क्रैश अकर्स. अगर पावर फेलियर हो जाता है या हमारा डेटाबेस क्रैश हो जाता है तो हमारे जो चेंजेस हमने किए हुए हैं और वो कमिट हो चुके हैं तो दे शुड बी परमानेंट. अगर हमारा सिस्टम दोबारा से रीस्टोर होता है तो वो चेंजेस हमें दिखने चाहिए. अगर हमने उन्हें कमिट कर दिया है तो वो रोल बैक नहीं हो सकते हैं उसके बाद. ओके, सो ड्यूरेबिलिटी मीन्स दिस. So these are 4 asset properties. So can we move forward? Yes, ma'am. Okay, now most important concept that we will study in Excel, Power BI, and SQL, all of these 3. Okay, so let's continue it in SQL first. The pivot operator and unpivot operator. Okay, so what is pivot? Pivot is basically used for transforming the rows into columns. If we have some data that is present in the form of rows in our table, if we want to transform it to columns, then we need to use the pivot operator. It's useful when you want to summarize data or display it in a cross tabular format. अगर हमें समरी दिखानी है किसी चीज की, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा डेटा रोज में प्रेजेंट है उसे हम कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फिर हम उसे पिवट ऑपरेटर के थ्रू इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. फाइन. सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ समराइज्ड डेटा और द क्रॉस टेबुलर फॉर्मेट. फाइन. Okay, so first data, we create the tables. Fine. So I'm creating one table, sales here, with salesperson, month and amount, these 3 columns, and then I'm inserting the values, and you can see the table at my screen. Okay. So now you can see we have months data in rows. So we have one column named months. Okay, January, February, then Jan, Feb. Same, only 2 months I have taken here. So it will be easier for you to understand. Okay, to visualize how our data should come after we will do pivot here. Okay, so
अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक पिवट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अभी क्या करना है, हमें हमें हमारी क्वेरी में एक कॉलम चाहिए सेल्स पर्सन, ठीक है, और फिर हमें मंथ की जगह यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड्स हमारे रोज में आ रहे हैं ना अभी, जनवरी जनवरी फरवरी, ओके, सो इट शुड बी इन द columns, like instead of month here I need January then February. Okay, अगर हमारे पास और भी डेटा होता like March April, then all the months should be in the columns, one month for one column. Okay, after salesperson there should be January column, then February column, then March, okay, April, May, something like this. Fine. तो वो मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेशन करना पड़ेगा, तभी मेरा जो अमाउंट है वो जनवरी के लिए रोज में आएगा, राइट, जो अमाउंट की वैल्यू है वो किसी सेल में आएगी, ठीक है, तो जनवरी के लिए जनवरी का अमाउंट आना चाहिए, फरवरी के लिए फरवरी का अमाउंट आना चाहिए, तो इसमें हम लोग एक पिवट ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, तो पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे, select salesperson January February from, okay, so we are using one subquery here. Okay, in this subquery we are taking our data from the sales table, the same data, salesperson month and amount, okay, from the sales data, ठीक है, और फिर जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो फिर इसमें से हम हमारा सेल्स पर्सन और जनवरी और फरवरी का नेम उठा रहे, means only these 2 months, January and February, 2 new columns, okay, in the main query, right, और फिर हमने इसे नाम दिया हमारी सब क्वेरी को सोर्स टेबल. Okay, now we are pivoting it by using one function sum amount. तो यहाँ पे हम लोग सम कर रहे हैं, हर मंथ का सम कर रहे हैं, और मंथ जो है हमारे जनवरी और फरवरी में होना चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं तो हम जनवरी और फरवरी दो ही वैल्यूज यहाँ पे दे रहे हैं, ये हमने इनके अंदर इन ऑपरेटर हमने सीखा था उसमें दो वैल्यूज यहाँ पे दे दी, और इस नया ये जो नया टेबल बनेगा इसका नाम होगा पिवट टेबल, राइट. So what it will do, it will give us one new resultant table where we have salesperson first column, then January second column, then third is February, and the amount is in the values for the corresponding salesperson for the corresponding months, right? So we need to aggregate it. Do people understand why we are aggregating the amount here? Okay, let me run this, then you can visualize it. Okay. Now, for salesperson Alice, we have January month, we have 3000. Okay. So what it does, इसने क्या किया, इसने जो हमारे पास अमाउंट था जनवरी के लिए उसका सम कर दिया और जनवरी में हमें दिखाया इसने पिवट करके, ठीक है, तो जनवरी और फरवरी हमारे पास जो रोज में प्रेजेंट था डेटा, मंथ एक कॉलम था और जो रोज में डेटा प्रेजेंट था उसने इसे ट्रांसफॉर्म करके कॉलम में लाके दे दिया है, ठीक है, तो अभी हमारे पास जनवरी एंड फरवरी देयर आर 2 कॉलम्स इंस्टेड ऑफ रोज, राइट, सो पिवट इज बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म द रोज इनटू कॉलम्स. गेटिंग? Yes, ma'am. Every one of you? Yes, ma'am. Yes. Great. So we need to basically learn the syntax. Okay, concepts I am explaining and you are getting, that is okay, but to write them and to find whatever query is written, what it will fetch, we need to learn the syntax, right? Okay, so one more example we have. Okay, here we have one student table. Okay, where, sorry, we have one table called marks. Okay, where we have the marks of the student and their subjects as well. Fine. So we have two students, John and Jane, and there are two subjects, maths and science, and their respective marks, right? Okay, so we have the table ready with us now.
Okay, so this is the table. If we want the subjects that are present in rows to be in columns, then what we need to aggregate? We need to aggregate the marks, correct? And this time I don't want to aggregate them by summing. Okay, I want the maximum marks, okay, for each student, for each subject. Fine. So the query should go like this: select student, maths and science. So these two columns that I want in my new resultant table with the student column. Okay, so it will take subject from the subject column, it will take maths and science two values and convert them to the columns. Okay, and then I am selecting from the source table, from the main table, that is marks, I am selecting student, subject and marks from marks table, and I am aliasing it as source table, and then afterwards I am pivoting it, aggregating maximum marks for subject in maths and science. So I am giving the list here as maths and science. These are the two columns that will be present with the students in my pivot result. Okay, the resultant that I will get after running this query. Okay, so this time aggregation is through our marks. Fine. So we are taking maximum marks of the students. Now, as we have learned about the pivot, pivot is to convert the rows into columns, and unpivot is just the opposite of pivot. Okay, so what unpivot do? Unpivot operator transform columns into rows. फाइन. सो जो वैल्यूज हमारे पास कॉलम्स में है, मतलब कि अगर कोई एंटिटी है, सॉरी, अगर कोई फील्ड है जो मेरे पास कॉलम में प्रेजेंट है, उसको अगर मुझे रोज में कन्वर्ट करना है, मतलब जो वैल्यूज आए वो रोज में आए, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अनपाइवट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा. इट्स यूजफुल व्हेन यू वांट टू नॉर्मलाइज वाइड डेटा फॉर्मेट्स इनटू वर्टिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी हमारे पास जो डेटा है वो ऐसे है, मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स है मैथ साइंस, फिर और भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, बहुत वाइड जाता, मतलब आर्ट्स हो जाता आगे, फिर उसके बाद सोशल साइंस हो जाता, और भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पे हो जाते. ठीक है, संस्कृत हो जाता, हिंदी हो जाता, मैनी सब्जेक्ट्स, इंग्लिश. ठीक है, सो इट विल गो वाइड, राइट. तो अगर मुझे इसे वर्टिकल फॉर्मेट में देखना है, तो मैं क्या चाहती हूँ, मेरे जो सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट जो है ये मेरे रोज में आ जाए. जैसे पहले पाइवट करने से पहले मेरे पास डेटा था, तो मुझे वैसा डेटा देखना है, तो मुझे इस डेटा को अनपाइवट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैं एक नया टेबल बना रही हूँ, इसका नाम है मंथली सेल्स. फाइन, एंड आई एम इंसर्टिंग द वैल्यूज इन इट. लाइक in monthly sales, I have salesperson as one column and January and February, these two month names this time in the as the column names. Okay, so I want these columns January and February in the rows this time. So I am reversing my work that I have already done by pivoting the data. Okay, फाइन. तो अभी सेल्स पर्सन है हमारे पास दो, और उनका जनवरी का और फरवरी का डेटा है. ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो जनवरी और फरवरी हमारे पास कॉलम में है, और मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करके जनवरी फरवरी को रोज में लेकर आना है. तो मुझे क्या करना है? मुझे अनपाइवट का यूज करना है. okay. So this time we need to write the query like this: select salesperson, and then we are giving a name here as month. तो मेरे पास जो एक नया कॉलम बनेगा जिसमें रोज के फॉर्म में जनवरी और फरवरी मुझे मंथ्स के नेम मिलेंगे, उस कॉलम का नाम क्या होना चाहिए वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, मंथ होना चाहिए. ठीक है, और फिर उसके बाद एक और कॉलम आएगा अमाउंट, और उसमें फिर ये जैसे यहाँ पे मेरे पास मंथ आएगा सेल्स पर्सन के बाद, और मंथ में जो वैल्यूज आएंगी वो जनवरी फरवरी आएगी, और यहाँ पे एक नया कॉलम आएगा अमाउंट, दैट इज द थर्ड कॉलम, और उसमें फिर जनवरी का अमाउंट आएगा, दैट इज 1000. ओके, 1000 फॉर द सेल्स पर्सन 1 एलिस. फाइन, देन फरवरी का अमाउंट नेक्स्ट रो में आएगा. ओके, so I am going to unpivot it. So I am selecting this as the month is the name of the new column that will contain the values. They are in the form of rows that are present in the columns right now. Fine. So from monthly sales I am
selecting these many fields and unpivoting it amount for month in January and February. Fine. So here I am giving January and February to be like the column names to be in the rows. पर जब मैं पाइवट कर रही थी तो मेरा जनवरी फरवरी लिखने का जो फॉर्मेट था वो ऐसे था. यहाँ पे मैंने जो हमारे बिग ब्रैकेट्स होते हैं या फिर ब्रेसेस होते हैं वो यहाँ पे लगाए हुए थे. ये वाला फॉर्मेट था. ठीक है. ओके. बट because I am unpivoting the data, that's why I am writing them like this. So we need to mug up the syntax. Okay. So you can see now the salesperson. There are now 2 rows for Alice and 2 rows for Bob because we have 2 months data for Alice and 2 months data for Bob, January and February. This time the these values January and February are coming in rows because I have unpivot the data here. Getting? Getting? Yes, ma'am. Great. Ma'am, I have a doubt here. This is similar to Excel pivot and N pivot, right? So Same thing we will do in Power BI also. okay, so there is no difference, or there is no upper hand that SQL has. No. Okay. But we need to understand the syntax here in SQL. In Excel and Power BI, we can directly do it by dragging and dropping. Okay, got it. So if you have used pivot and pivot in Excel, so we just need to drag and drop the fields there. But here in SQL, we have to understand the syntax also. Right? Now, one more example for unpivot. We are having one more example. So here I am creating one table, student scores, where I have student name and in one column and 2 more columns, maths and science. Okay, so in maths and science we will store the marks of the students. Okay, and I'm inserting two records in this student scores table, John and Jen, and then their marks, respective marks for maths and science. Okay. ये हम वही सब करें जो हमने पहले किया था, अब उसका उल्टा चल रहे हैं हम. ठीक है. पहले पिवट किया और फिर अनपिवट कर रहे हैं. तो उसका सिंटेक्स और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ. ये देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे डेटा ऐसे इंसर्ट हुआ है हमारे पास, जो कि बेसिकली हमारे पास अनपिवट करने के बाद आया था. पहले हमने टेबल में जो डेटा इंसर्ट किया था उसमें मैथ्स और साइंस जो है वो रोज में थे, और अब ये वाले जो मैथ्स और साइंस का जो मैथ्स और साइंस जो है ये कन्वर्ट होके रोज में आ जाएंगे जब हम अनपिवट करेंगे. फाइन. ठीक है. तो अभी मेरे पास स्टूडेंट स्कोर्स एक टेबल है. ठीक है. और उसका डेटा कुछ इस तरीके से है. तो मुझे अभी अनपिवट करना है और मैं चाहती हूँ कि ये जो मैथ्स और साइंस वाला जो डेटा है, मतलब मैथ्स और साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो नेम है ये रोज में आ जाए. तो ये कौन सी कॉलम में आने चाहिए? सो लेट मी नेम दैट कॉलम एज सब्जेक्ट. फाइन. सो आफ्टर स्टूडेंट आई पुट सब्जेक्ट हियर. So you can see it in blue color because it is the column name that we are giving. It is already not present. The already present columns are coming in black, right? So I need to mention one column name here that should contain the values like maths and science or any other subject that is present in our table. Okay, and then I want one more column, marks. Okay, क्योंकि because this subject, जो ये मेरा सब्जेक्ट है उसके अंदर तो मैथ्स और साइंस आएगा रिकॉर्ड्स में, या सब्जेक्ट के नेम्स आएंगे. तो फिर ये जो स्कोर आ रहा है, ठीक है, ये जो मार्क्स आ रहे हैं ये कहाँ पर जाएंगे? ये यहाँ पे एक नया कॉलम बनेगा मार्क्स, और वहाँ पे न्यू कॉलम में आपको दिखेगा. फाइन. फ्रॉम स्टूडेंट स्कोर्स
unpivot marks for students in maths and science. Fine, as unpivoted marks. So ये तो एलियास नेम है, ये हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें सिंटेक्स बेसिकली देखना है, ठीक है। और मैथ्स और साइंस जो है ये हमारे कॉलम के नाम है और ये अभी रोज में आने वाले हैं, तो मुझे ये इन ऑपरेटर के थ्रू इनमें से सेलेक्ट करवाना है। फाइन, एक बात आप ध्यान रखिए कि जब हमने पाइवट किया तो हमें एग्रीगेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि इट विल बी अ समराइज्ड डेटा। फाइन, पर जब हम अनपाइवट कर रहे हैं तो हम एक समराइज डेटा को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर हमें एग्रीगेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो जब भी हम पाइवट क्वेरी लिखेंगे हम समराइज करेंगे तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। फाइन, तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये एक नया कॉलम बना और इसमें मैथ्स और साइंस यहाँ पे वैल्यूज आ गई और फिर हमारे पास मार्क्स है और मार्क्स में जो भी मैथ्स के मार्क्स थे फॉर द पर्टिकुलर स्टूडेंट फॉर द स्पेसिफिक वन वी गेट हियर। सो पिवट एंड अनपिवट का सिंटेक्स उनका क्या यूज है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है, आई थिंक यू पीपल गेट इट, राइट। Okay. Let me open the new file then. We should start the new topic. Okay. Okay, so we will now discuss about the query optimization and indexing part. Okay, so आपको मालूम ही है कि query optimization क्या होता है कि efficient way में हम query लिखें और उसका जो execution time है वो भी कम होना चाहिए और required output हमें मिलना चाहिए। Fine. So query optimization is the process of choosing the most efficient way to execute a SQL query by the SQL Server Query Optimizer. तो ये important क्यों है? एक तो इसमें execution time हमारा reduce हो जाता है, दूसरा जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनका कंजप्शन भी कम होता है। हमें ये एग्जीक्यूशन प्लान में चेक करना होगा कि जो हमारा सीपीयू है वो कितना यूज हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो सब हमें एग्जीक्यूशन प्लान के थ्रू पता चलता है। ओके, नाउ एग्जीक्यूशन प्लान ओवरव्यू, हाउ सीक्वल सर्वर ऑप्टिमाइजेस द क्वेरी। तो एग्जीक्यूशन प्लान हम लोग कैसे देखेंगे, एक सीक्वल सर्वर एक एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट करता है, ठीक है। और जब हम इंडेक्सिंग देखेंगे आगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये दो तरीके से हम लोगों की जो क्वेरी होती है, हमने कुछ रन किया जैसे सेलेक्ट में कुछ लिखा और फिर हमें वो फाइंड आउट करके लाना है, तो वो दो टाइप का होता है, एक स्कैन होता है और एक सीक होता है, ठीक है। तो जब हम इंडेक्सिंग पढ़ेंगे तो हम आगे ये डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम एग्जीक्यूशन प्लान देख के ये मोस्ट इफेक्टिव वे उसमें हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे एसएसएमएस में हाउ वी कैन व्यू द एग्जीक्यूशन प्लान, सो वी कैन डू इट बाय कंट्रोल एम आल्सो। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है वहाँ पे आपको कंट्रोल एम के लिए एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, that is include actual execution plan. So if we select this also, we can get the execution plan for the particular query, right? So when we will discuss indexing, I will show you. Okay. So here, what I'm doing, I'm creating one table named products with product ID, product name, and price. Okay, and then I'm inserting the data into it.
Fine. So we have 4 products with laptop, mouse, keyboard, and monitor, and their respective values. Okay. Then if I want to query query from the product table with the product name as mouse, तो अगर मेरी टेबल के ऊपर इंडेक्स नहीं लगाया है मैंने, तो जो एसक्यूएल सर्वर है वो एक स्कैन करता है, ठीक है, और स्कैन करता है तो वो सारे रोज को देखता है पहले कि किससे डेटा मतलब क्यूरी में जो हमने स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं फिल्टर करने के लिए वो किससे मैच हो रही है कंडीशन। तो स्कैनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। तो इंडेक्सिंग का यूज बेसिकली क्यूरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए ही होता है। सो इंडेक्सिंग होती क्या है? Okay, an index is a data structure that improves the speed of data retrieval operation on a database table. Okay, तो अभी SQL में 2 टाइप के इंडेक्स होते हैं, क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली जैसे हमारे पास हमारी बुक में एक इंडेक्स होता है, और अगर हमें मान लीजिए बुक खोल के चैप्टर नंबर 4 पे जाना है, तो अगर मैं बिना इंडेक्स के काम करूं तो चैप्टर 4 के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ओपन करने के लिए उसे, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं अपनी टेबल में इंडेक्स देखूं और चैप्टर 4 का पेज नंबर देख लूं तो मैं डायरेक्टली उसके ऊपर जा सकती हूँ। तो ये सेम वैसे ही काम करता है। आप मान लीजिए कि जो हमारी टेबल है वो एक बुक है, ठीक है, अगर मैंने उसके ऊपर एक इंडेक्स लगा दिया तो वो इंडेक्स वैसे ही काम करेगा जैसे हमारी बुक का इंडेक्स काम करता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस इन SQL सर्वर, इसमें बेसिकली 2 ही मेन टाइप्स होते हैं, एक क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है, एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है। सो द क्लस्टर्ड इंडेक्स स्टोर्स एंड sorts and stores the data rows in a table based on a key। जब हम क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाते हैं तो ये हमारे डेटा को सॉर्ट कर देता है, मतलब कुछ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वे में ये सॉर्ट करेगा और फिर डेटा को स्टोर करके एक की के बेस पे ये स्टोर करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा आता है वहां पे हमारे पास एड्रेसेस आ जाते हैं, ठीक है। नाउ for the non-clustered index, it stores a copy of the indexed columns with a pointer to actual data। ओके, तो जो एक्चुअल डेटा हमारे पास है उसका हमें पॉइंटर मिलेगा नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में, जबकि क्लस्टर्ड इंडेक्स में एक की होती है और वो उसी के बेसिस पे सारे डेटा को स्टोर करता है और सॉर्ट करके रख लेता है। फाइन। सो अभी इसके बारे में क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के बारे में हम लोग मतलब दोनों में हम लोग क्या करते हैं और कैसे हमारा एग्जीक्यूशन प्लान डिफरेंस आता है अगर हम इंडेक्स लगाएं किसी टेबल पे और ना लगाएं, ठीक है। तो ये डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कल है, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ in this example, as you can see, I am creating one non-clustered index for optimization. So the syntax for creating a non-clustered index goes like this. Create, these are the keywords that we need to use, okay. Create non-clustered, because I am giving here the non-clustered index, so it will create a clustered that whose type will be non-clustered, okay, and the name of the index will be this one, okay, on the products table, okay, and on the column name product name, fine. And then if this this line will, when I will execute this line, it will create a non-clustered index on our table. But if I want to drop the index, then I need to use drop. So this is so simple. We need to use create and we need to use drop to create and drop the indexes respectively. Fine. So this execution plan difference, this we will discuss in tomorrow class, okay. तो अभी ये जो मेरा टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पे पहले जो मैंने क्वेरी आपको ये दिखाई थी, ठीक है, ये विदाउट एनी इंडेक्स रन करा तो स्कैन उन्होंने किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स बना देती हूँ, एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना देती हूँ, देन अगेन मैं ये वाली क्वेरी फिर से रन करती हूँ, तो इस बार जो होगा वो स्कैन नहीं होगा टेबल का, इस बार जो होगा वो एग्जीक्यूशन प्लान में आप देखेंगे तो इंडेक्स का सीक होगा, ओके। दिस विल यूज एन इंडेक्स सीक व्हिच इज मच फास्टर देन अ टेबल स्कैन, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमें इंडेक्सेस यूज करने चाहिए जिससे हमारा जो डेटा फेच होके आ रहा है वो एफिशिएंट वे में आए और मिनिमम टाइम लगे उसमें, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी लेस कंजम्पशन हो उनका भी, ठीक है। तो कुछ इसमें टिप्स हैं, जैसे क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हमें सेलेक्ट में
जो सेलेक्ट क्लॉज है उसके बाद जो हम कॉलम नेम्स देते हैं, हमें रिक्वायर्ड कॉलम का नाम ही देना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम लोग ये एग्जांपल्स देख रहे हैं तब तो 2-3 कॉलम के साथ हम एग्जांपल देखते हैं और कंसेप्ट को सीख लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास रियल टाइम डेटा होता है तो बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और बहुत सारा डेटा भी होता है, मतलब कि बहुत सारी रोज होती हैं कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो हमें स्टार का यूज नहीं करना चाहिए या मिनिमाइज्ड होना चाहिए वो, ठीक है। तो required columns, we should use the required columns in the select clause. Okay, use proper where clause filters. Okay, अगर हमें जो डेटा चाहिए वो हमें मालूम है कि हमें पर्टिकुलर इसी कॉलम के लिए इसी वैल्यू के लिए डेटा चाहिए, तो हमें फिर वेयर क्लॉज का जो फिल्टर है वो प्रॉपर करना चाहिए। उसका जो फिल्टर वाला यूज है वो प्रॉपर करना चाहिए। उससे क्या होगा, इट रिड्यूसेस द स्कैन्ड रोज, ठीक है। अगर हमारी टेबल के ऊपर इंडेक्स नहीं लगा हुआ है तो फिर वो स्कैनिंग ही करने वाला है। तो अगर हम हमारे डेटा को पहले से ही फिल्टर करके रखेंगे वेयर क्लॉज के थ्रू, तो वो स्कैन्ड जो रोज आएंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, फाइन। उसके बाद यूज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का यूज मैंने आपको भी बताया, ये मैचिंग कंडीशन के लिए होता है। जब हम सब क्वेरी लिखते हैं तो सब क्वेरी में जो मैचिंग वैल्यूज होती हैं वो हमें ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो एग्जिस्ट हमें यूज करना चाहिए इनकी जगह। इन हम लोग यूज करते हैं जहाँ पास लिस्ट है और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है, मल्टीपल वैल्यूज है, तो इनकी जगह आप एग्जिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। लार्ज सब क्वेरीज के लिए जो एग्जिस्ट का यूज है वो इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है यहाँ पे कि हमें क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए एग्जिस्ट का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इन कीवर्ड, फाइन। इट अवॉइड फंक्शंस ऑन इंडेक्स्ड कॉलम्स। ओके, तो जब हम अब ये इंडेक्सिंग वाला पॉइंट है, तो जब हम इंडेक्सिंग देखेंगे तभी देखेंगे, अभी ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। हाँ, एक इसमें एक और फीचर होता है, स्टैटिस्टिक्स को हम लोग स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर क्वेरी सीक्वल सर्वर में, ठीक है। तो ये वाला इसके लिए कमांड्स होती हैं, वो मैं आपको कल जब इंडेक्सिंग बताऊंगी तो उसमें मैं वो कमांड्स भी इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो वो हम स्टैटिक्स को अगर ऑन करके रखें और हमारी क्वेरी को रन कर दें तो फिर हमें पता चलेगा कि बेसिकली कितना यूज हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का और कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। और फिर जब वो क्वेरी रन हो जाए और हम लोग अपना स्टेटस चेक कर लें उसके बाद हम उसे दोबारा से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन SQL सर्वर में अवेलेबल है। वी नीड टू यूज द एप्रोप्रिएट इंडेक्सेस बेस्ड ऑन आवर क्वेरी लोड, ओके। तो हमें प्रॉपर इंडेक्स का यूज करना आना चाहिए कि हम लोग कैसा इंडेक्स लगाएं, कौन सी टेबल के कौन से कॉलम पे इंडेक्सिंग होनी चाहिए जिससे हमारी जो क्वेरीज हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पुअर और ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी का एग्जांपल है, बट दिस एग्जांपल इज यूजिंग okay, you can see this because it is not based upon index, okay. So select star from orders where year order date, so I am filtering the data depending upon the column ऑर्डर डेट और उसमें फिर मैं ईयर को चेक करा रही हूँ, दैट इज 2024, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे ईयर फंक्शन का यूज किया है, तो ये जो मेरी क्वेरी होगी ये पुअर कही जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें मैं एक फंक्शन का यूज कर रही हूँ। सो इंस्टेड ऑफ फंक्शन I need to use the operators, okay, and this function will prevent the index use, that's why अगर मैंने अपने टेबल के ऊपर कुछ इंडेक्स लगाया हुआ है तो वो इसे प्रिवेंट करेगा, मतलब इसे यूज नहीं करने देगा इंडेक्स को, इसलिए फंक्शन का यूज नहीं करना चाहिए और मुझे ये ऑपरेटर्स का यूज करना चाहिए, फाइन, ठीक है। तो जो ऑर्डर डेट के ऊपर इंडेक्स लगा हुआ है मेरी टेबल में, वो इस अगर मैं ये क्वेरी लिखती हूँ तो ये इंडेक्स का यूज करके हमें सीक ऑपरेशन से डेटा लाके देगा, ओके। फिर जब हम इंडेक्सिंग पढ़ेंगे तो फिर ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं, कैसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब कैसे इंडेक्स को, एक तो ये देखना है कि टेबल के ऊपर इंडेक्स कहाँ पे लगाना है, कौन से कॉलम पे लगाना है, फिर कौन सा वाला इंडेक्स लगाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखनी है और फिर इंडेक्स को मेंटेन कैसे करना है, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, fine, we will meet tomorrow. If you people have any question you can ask.
No questions? So we can end the meeting. Thank you. Okay. No question from any of you? Right. Okay. Okay. Fine. There is no doubt in today's class, right? We are Yes. discussing indexing tomorrow, right? Yes. Okay. Okay. Fine. Thank you. Bye.